हाय मैं हूं विद्युत जामवाल। हाय मैं हूं अर्जुन रामपाल। कि विलन स्ट्रांग हो तो फिल्म ऑटोमेटिकली बिकम्स रियली स्ट्रांग। अब कैसे बोलूंगा, मेरी तो फट गई थी अगर आपको फिटनेस मंत्रा चाहिए तो प्लीज क्रैक। हमें साइकिल दी जाती थी और कहा जाता कि इतना शॉर्ट है, हम दोनों लगे रहते थे। रोज साइकिलिंग ही कर रहे हैं। ये तो एक दिन वेंट थ्रू अ कैफे, इन द मिडल ऑफ अ कैफे सडनली उसने कर दिया एंड ही डिड इट एक्सीडेंटली या इंटेंशनली पता नहीं, बट ही वेंट। तो उसको अच्छा लग गया शॉट, यार ये तो अच्छा था ये हो भी गया हमसे। दिल अरे और एक्टिंग पिक्चर में नहीं की मैंने। You're watching India's #1 म्यूजिक एंड यूथ चैनल मस्ती, और मस्ती करने आपकी खिदमत में वंस अगेन मैं अभिनंदन सिंह। तो वेल, आज जो भी काम है वो कर दो बैक, बिकॉज एक्शन होगा बैक टू बैक। बिकॉज लेके आ चुके हैं विद्युत जामवाल एंड अर्जुन रामपाल, जो अपनी फिल्म के बारे में बात करेंगे, दैट्स क्रैक। तालियां हो जाए फॉर आवर गेस्ट एंड थैंक यू। और इतना ही नहीं, यहीं तक नहीं, बिकॉज जब हमारे साथ दमदार आवाज हो, जिनकी आवाज म्यूजिक सुन के लोग कहें वाओ, that's my brother Vikram and Shilpa Rao. He's a poet. थोड़ा बहुत but I think आज का जो हमारा एपिसोड है, टीआरपी जो टूटने वाली है, बिकॉज एक्टिंग के धुरंधर है, म्यूजिक की इंडस्ट्री के जो दिग्गज कलाकार हैं, मुझसे दिग्गज इज अ हेवी वर्ड शिल्पा, राइट? Very heavy. but I think that's what you are, Shilpa. So warm welcome और जोरदार तालियां प्लीज फॉर आवर गेस्ट। Thank you. सबसे पहले बिकॉज आज का एपिसोड बहुत हैवी होने वाला है, सो हम हैवी आवाज अर्जुन रामपाल के साथ शुरुआत करते हैं। इट्स अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन विद विद्युत एंड अर्जुन's वॉइस। So I have to put on my bass voice. Yeah, of course. So Arjun, coming with this film Crakk, जब ये स्क्रिप्ट आपको सुनाई गई, this is the character, and of course people love to see you on screen. So what was like कि यार ये फिल्म मुझे करनी है, and that too with Vidyut? Well, actually, it was a very interesting story. कि ये फिल्म किस तरीके से मेरे पास पहुंची। He's a very close friend of ours, Parag Sangvi. He's a very, very dear friend of ours, and he, both Vidyut and me, like a brother. And he said कि अर्जुन मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, Vidyut's doing this film. You need to be part of this film. Right. He's the guy who I played cricket with before I became even a model. क्या बात? You know what I mean? Parag. So I was like, अरे यार, मगर Parag के जो म्यूजिक की जो फिल्मों की जो टेस्ट है, स्क्रिप्ट सेंस है, was not that great. Okay, from his track record. So I was like, but I have to do this movie, but I don't know what this film is, and I was extremely nervous. Then Aditya came with Parag for a meeting, and we were just sitting there. It was like he said, meet the director only. Right. And we were sitting at my apartment, and I was like, tell me the story. And Aditya started narrating to me the story, and I promise you, the relief that I had after I heard the story, because I was like, Parag, this is actually a brilliant script. Wow. This script has got so much going on in it. Okay, and it was actually kind of the first draft, and we were still kind of dwelling with it. But I was like, wow, but it's a very ambitious film. I was like, will we be able to do this? Will you be able to achieve all of this? And all were like, yeah, Vidyut is already sitting on all the choreography. He is already working out what kind of action sequences he wants to do, what you will be doing, and this is what's going to happen, and that's what's going to happen. And they were super, super excited. I was like, this is, if we can get even 60% of what is in this script, it's going to be fantastic. And touch wood, by the grace of God, and I think everyone's hard work in the movie, we've gone to 120%. Wow. That's where the film has gone, and I'm very proud of it. I'm very proud of this project, and I'm very glad that it came to me like this, and however it comes. But I think some roles and some parts are just destined, and this is one of those. Wow. And I think it's pretty much evident from the trailer. जब मैंने ट्रेलर देखा, I was like, wow, this is definitely a Vidyut Jammwal film. और फिल्म में बात करते हैं कि आप जिंदगी से खेलने की। यही बात है, पराग ने मैदान में तो 6 नहीं मारा, उसने स्क्रिप्ट में मार दिया। पराग वेल डन। पराग को तो मैं छक्के मारता था क्या बॉलिंग पे। I hope he's watching. अगली फिल्म में विद्युत डायलॉग्स भी लिख सकते हैं। I think you've got a really good humor. So well, विद्युत, मेरा सवाल ये है कि आपने फिल्म में जिंदगी से खेलने की बात की है, बट आई थिंक वो हर फिल्म में आप करते हैं, बिकॉज जो स्टंट्स हैं कमांडो से लेके ऑल द फिल्म दैट यू हैव डन सो फार, बट सही मायने में जिंदगी में कब लगा कि आपने जिंदगी के साथ खेला है? मतलब टू रिस्क इट, आप वो सवाल पूछ रहे हैं कि रिस्क राइट नाउ
रिस्क ना दो तरह के होते हैं, एक तो कैलकुलेटेड रिस्क होती है और एक मूर्खता वाली होती है कि यहाँ से मैंने छलांग मारूंगा दूसरी बिल्डिंग में लैंड हो जाऊंगा। एक वो भी रिस्क होता है और एक होता है जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम सही कर पाओगे, लगता तो है। ये उस तरह का रिस्क हर समय लेता रहता हूँ। आई हैव बीन डूइंग इट ऑल माय लाइफ एंड आई एंजॉय टेकिंग द रिस्क, सो इट्स ऑल द टाइम। वाह, वो हमने देखा है विद्युत के वीडियोस में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कभी छत पे छलांग मार रहे हैं, कभी वॉल्केनो बात कर रहे हैं, कभी आइस वाटर चैलेंज चल रहा है। वो देख के ही मतलब यू गेट जिटर्स लाइक वाओ, हाउ डू यू डू इट मैन, दैट्स अमेजिंग। खैर, इस फिल्म के साथ आपके 42 इंच शोल्डर्स में भी, नाजुक शोल्डर्स में भी एक स्ट्रेस आया है, मुझ से भार आया है एज अ प्रोड्यूसर बतौर, बिकॉज आपने यू आर ऑल्सो प्रोड्यूसर नाउ। और लोगों को लगा था कि 10 साल एक्शन करने के बाद शायद एक्शन खत्म हो जाएगा, विद्युत क्या करेंगे। तो विद्युत ने कहा ये सिर्फ टीजर था, पिक्चर अभी बाकी है, बिकॉज उसके साथ वो एक्शन हीरो फिल्म भी बनाने लग गए, एक्शन हीरो प्रोडक्शन हाउस के नाम से। सो विद्युत बतौर प्रोड्यूसर कितना स्ट्रेस रहता है, बिकॉज यू ऑल्सो अ लीड एक्टर एंड यू हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग। So, is it easy, tough? How is it? नहीं, मतलब जब आप IIT की पढ़ाई कर रहे होते तो मुश्किल होता है, Right. बहुत मुश्किल होता है, बट आप इसलिए नहीं करते हैं कि आपको स्ट्रेस होएगा। सिमिलरली द आइडिया ऑफ बीइंग अ प्रोड्यूसर वाज कि टेंशन खत्म करनी है। सो प्रोड्यूसर बनने के सारी टेंशन खत्म होगी। मैंने रियलाइज किया कि कई लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, या इस तरह के लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, अब मैं करूँगा। सो वी फाउंड एवरीबडी एंड लकी फॉर मी डेस्टिनी इज गुड। From the music artist to the performers in the movie, everybody's just following his place. So कोई pressure नहीं है, कोई tension नहीं है, बहुत मजे आ रहे हैं। क्या बात है। No, but that's I'll tell you that's a fact. Him as a producer, he's not saying it. It is stressful. You know, आप एक इतनी बड़ी टीम को लेके जा रहे हो. You're responsible for everybody. You know, from their stay to their mood swings to their tantrums to कि सब खुश हैं और he's been an amazing producer. कभी-कभी you're shooting in a foreign country, वहाँ पर languages के problem हो रहे हैं, तो crew members के बीच में तू मैं होने लगती है कभी-कभी, you know what I mean, to unite all of that, to bring all of that. I saw him do it in such ease and with such calmness, even if there was a biggest issue happening on set. On whichever day, because we're running out of time, and we're not going to get all the shots. And this location we don't have. I see Vidyut sitting on his chair with a smile on his face. So he was actually very zen-like in his approach. And I think that comes from his years of practicing in martial arts. I think that just comes to him very, very naturally. The way you look calm, Vidyut, मुझे लगता है कि numbers के साथ भी is really good. Because finances, कहाँ I don't budgeting think is, about that. You don't think? I don't think he's very good with numbers. जुबैल, अगला मेरा सवाल आपसे है, बिकॉज ट्रेलर में आई थिंक इस पे एक अलग से एक एपिसोड बन सकता है हमारा। खैर अर्जुन, ट्रेलर में आप बात करते हैं खिलवाड़ की जिंदगी के साथ। आपको ऐसा कब लगा कि यार यहाँ पे जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो गया? हालांकि ये दो ऐसी पर्सनालिटीज हैं, इनके साथ कोई खिलवाड़ कर दे तो भाई उसका क्या हश्र होगा, वी कांट इमेजिन। नहीं यार, बट या लाइफ इज अ गेम यार। ऊंच नीच, you go through those things. अगर वो नहीं, if you don't have that experience, you're not living a life. Right. So life is a high. Yeah, life is about going up and down, and and जितने भी phases पे आप जाते हो, there is a learning. Right. वहाँ से सीखने को मिलता है. You come back and you kind of keep, hoping not to make those same mistakes, to break patterns, become a better version of yourself, and that's it. Very well said. बिल्कुल सही बात है. Life is another high in a way. Coming to musicians, वो आवाज जिनको हर कोई सुन के कहे वाओ, that's शिल्पा राव. शिल्पा इतने सुपर हिट दे के आप बोर नहीं हो जाती? मतलब आपका कोई भी गाना आता आने से पहले ही सुपर हिट हो जाता है. Of course, that's a magical voice, a dedication. तुम रोज अच्छी बातें करके बोर होते हो क्या? तो अच्छे काम करिए, थोड़ी बोर होता है. भाई मूड में आज बोल रहा हूं. आप सब कमाल होता है. हर दिन एक्सीलेंस करने का जो मजा है उसमें क्या बोरियत होगी? Of course, yeah. बट हमारा मस्ती का स्टाइल है, थोड़ा सा शिल्पा ऑलरेडी नोज कि हम मस्ती करते हैं. जैसे आज आप मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, बट मैं सीरियस बातें कर रहा हूँ. ये सब बात सीरियस है. Shilpa, I mean, firstly, congratulations for so many awards that you've been getting. Thank you so much. And we always love your voice. So, जब इतनी एक्शन भरी फिल्म में आप गाना गाते हैं, तो आपको लगता है कि स्टूडियो में 2-3 स्टंट हो जाएं यार, बिकॉज वो तो फिल्म में कर ही रहे हैं. ये स्टंट्स उनको करने दो. वोकली स्टंट्स हम कर सकते हैं. That we keep doing in the studio, and we risk our emotions when we put those emotions in the song. So we're doing that with every single recording, and every song has
a part of us. And you find a new version of yourself when you record something, because sometimes you're not even aware कि ये आप कर भी सकते हैं, like this can be possible, and you can emote something like that. So you meet a new version of yourself. So yeah, with every song, love to meet another version of myself. Of course, and of course that's the reason, because one voice that's been, loved by everybody, that's Shilpa Rao. And congratulations for so many awards. Thank you so much. And of course my brother Vikram is right here with us, जिन्होंने विद्युत के साथ, पहले हम सब जानते हैं, मैं फिर से बता दूं, Knock Knock तेरा बाप आया. Vikram and Farhad's very strong voice, they've given this one of the anthems, I would say. Knock Knock Tera Baap Aaya. Once again working with Vidyut, and then I'm sure because you also have a responsibility, because आपने इतना massive hit दिया है, तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं. Responsibility as a music composer बहुत होती है, and of course you've also given many other hits. So how was experience this time, Vikram? Working with Bhai is like just amazing. Yeah. He's an amazing human being, and interactions with him इतना सीखने को मिलता है. Right. और making music for this film was one of the best things that happened. Right. And that is because of obviously Aditya. That's his vision, the entire background score and everything. When जब उन्होंने पूछा मुझसे कि मैं करूँगा कि नहीं, and then I watched the film. मैंने कहा film मैं देखना चाहता हूँ. Okay. And then I saw it, and थोड़ी देर के लिए I was कि you seriously want me to do it? You think I'll be able to do it? Wow. So he said yes, and then we went ahead with it. And so it's his vision. That's for sure. So मतलब ऐसा डर लगता है कि विद्युत भाई हैं, कभी गुस्सा ना हो जाए, यार ये क्या बनाया है सब? नहीं, he's very sweet. वो किसी की किस्मत बहुत अच्छी होगी, मुझे गुस्से में देख लिया. बहुत क्षमता होती है. देखते हैं हम लोग. अब तो हो सकता है. He's super. He is. Right. Because you've designed the whole film in a way since you've become a producer, Vidyut. So acting आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं माशाल्लाह, वो हम सब देखते हैं. प्रोड्यूसर आप बन चुके हैं विद एक्शन हीरो फिल्म्स, तो डायरेक्शन में भी आपको लगता है कि यू विल जंप समवेयर? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. डायरेक्टर्स में एक बहुत अलग एबिलिटी होती है. Right. बहुत अलग एबिलिटी, उनमें एक पेशेंस होता है जो मुझे लगता नहीं है. मुझे वो सीखने की ज़रूरत है, मन है. विक्रम की मैं जिक्र करना चाहूँगा, ये बहुत उम्दा इंसान भी हैं, बट अगर वो नहीं होते तो इतने अच्छे म्यूजिशियन भी नहीं होते. जिस तरह की इनकी सोच है, जिस तरह की आवाज़ें सुनते हैं, जिस तरह की ध्वनि का इनको शौक है, इट्स वेरी अनयूजुअल. और इनकी बातों से इतना नहीं पता लगता है, क्योंकि जब ये बनाते हैं तो एक अलग इंसान होते हैं, जिस चीज़ की मैं बहुत कदर करता हूँ इनकी. So when I think Vikram is all blushing right now because विद्युत भाई से इतनी तारीफ सुन ली है. He's just being kind. No, but he's being actually real and honest, because that's what people have loved your music as well. बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, we all know about it. ऐसे में of course Vidyut, you were the producer, and when it comes to taking a strong villain, because अच्छे निर्माता ये सब जानते हैं कि villain strong हो तो film automatically becomes really strong. So when you have antagonists like Arjun Rampal, so what was the whole mindset behind it? Because when you see Arjun as antagonist, you are like, wow. So what was in your mind, or it was director's call? So how did this design happen? नहीं, जब कास्टिंग होती है तो फिर कई लोगों के जहन में होता है कि किसको लाया जाए, किसको नहीं लाया जाए. So his name, the moment it comes, it's a yes. मेरा yes डबल इसलिए था क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि इनमें वो क्षमता है जो मैं निकाल लूंगा. इतनी मेहनत करवाऊंगा, हर स्टंट करवाऊंगा, और जो भी मैं कर रहा हूँ इनसे करवाऊंगा. ये मुझे यकीन था कि मैं इनसे निकाल लूंगा. I hadn't met him before. I just met him a few times but never chatted. I knew कि इससे निकाल लूंगा. So when we were doing the movie, ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने नहीं किया. क्या बात है. और मुझे लगता है it was like a high-end training on the movie. It was like a crash course on being very fit. Wow. So जो मुझे लगता था उन्होंने प्रूव कर दिया. जिस चीज़ का मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से. Wow. And Arjun, what is your take on this? अब कैसे बोलूँ, मेरी तो फट गई थी. And he says it also. He tells you what's happening in his mind. मेरी तो फट गई थी कि यार ये. We felt his body. I mean, I feel I'm strong. Okay, and I'm a fit guy. But this guy is a professional athlete. Right. वो कैसे घूमता है, suddenly कैसे निकल जाता है, कैसे पकड़ लेगा. You suddenly won't be able to move in a particular way. When you wrestle with his body, you can't hold on to it or grab it, on that level where you can have control over it. When we are like cycling together, when we are like chasing each other, there's a serious amount of competition. You forget who you are. I think that's what was important. एक sportsman होता है आपके सामने, right? And he's such an incredible player. तो आपका game ऊपर ही होता है. You have to compete you have to up your game. So I had to up my game many notches. Wow.
to be able to achieve what we wanted to achieve. और उससे अच्छी फीलिंग आपको मिल ही नहीं सकती. I think इस फिल्म के स्केड्यूल के बाद अर्जुन must have been feeling even more fit, you know. Super fit. Super fit. इतना fit तो मैं कभी नहीं बना हूँ. So did you? जिंदगी में. So अगर आपको फिटनेस मंत्रा चाहिए, so please crack this producer, this actor to work with. We wrestled with our bodies, you know. It was rolls. वर्जिश लगती थी हमारी ये. Picking him up, throwing him, you know, it's not easy. Not easy. I'm sure he's a very, very tough guy. Magar it's acting, finally, you know. Or some of the punches that Vidyut lands imprinted in my life forever. I was about to ask you the same. हमने बहुत I was मजे about किए. to ask. हमें साइकिल दी जाती थी और कहा जाता कि इतना शॉर्ट है. हम दोनों लगे रहते थे because the thrill of riding a cycle without worrying about the traffic. Right. और फिर ये आगे होते थे, कभी मैं आगे होता था, हमारी रेस चालू रहती. Fitness चालू ही freaks. रहती थी. It was amazing. हम रोज साइकिलिंग ही कर रहे हैं हर शाम को. We used to go off, you know, flying off stairs, you know, on the pathways, tunnel के through जा रहे हो. ये तो एक दिन went through a cafe. You know, in the middle of a cafe, Wow. suddenly. Only Vidyut can do it, for तो sure. उसने कर दिया, and he did it accidentally, intentionally, पता नहीं, but he went. Oh. तो उसको अच्छा लग गया शॉट कि यार ये तो अच्छा था. ये हो भी गया हमसे. तो हमने फिर जाके कैफे वालों से परमिशन ली, उधर कैमरा लगाया, and we did the shot again. And we are not professional cyclists, but I think जब आप एक frame of mind में आ जाते हैं कि हमें करना है, और acting इतनी खूबसूरत चीज़ है जो आपको एक मौका देती है टू बिलीव इन समथिंग. तो जब आप उसमें विश्वास करते हो, उसमें बिलीफ डाल देते हो, तो आपको वाकई में लगता है हाँ यार मुझसे हो जाएगा. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट हैपेंड ऑन दैट लेवल. On that note, Vidyut, Deepika Padukone ने during the promotions of Om Shanti Om कहा था, Arjun Rampal is the most difficult antagonist to imagine. It's very difficult to imagine Arjun Rampal as a villain. आप इस पे क्या कहोगे? मुझे लगता है कि he's a guy, he can mold himself into anything. I think he's unlimited. Wow. I can imagine him as anything. The way you've seen his movies, he does different characters. You can mold him into anything. I think in this film also, जब आप देखोगे, it's not like there are two types of villains. एक है कि it's just black, you know, उसमें कोई layers ही नहीं है. There is nothing. इस फिल्म का जो title है, it's Crakk. Right. Crakk क्यों है? Because everybody's cracking at some point in time. Right. Each and every character in the film cracks. There's a cracking point of that film. कि वो crack बन जाता है. There's a crack point for my character. There's a crack point for his character. There's a crack point for every character. जब भी आप film देखोगे, that's why the film's called Crakk. Right. All these people crack at some point in time because of the pressure that is put on to them. Interesting. That gives a lot of opportunity for an actor to explore different kinds of emotions in an action-packed film, which is very rare. Which is what I really loved about the script. I feel because बहुत लोग जानना चाहते हैं, Vidyut has been doing volcano mud, I guess, volcano bath, ice bath, ये सब चीजें करते हैं, और इस बीच आप फिल्म भी शूट करते हैं. वो सब तो कुछ नहीं है. वो सब तो कुछ नहीं है जो हमने Instagram पे देखा है guys. So मैं जानना चाहता हूँ, और हमारे साथ जो देश की जनता है, कि विद्युत जम्वाल की डेली रूटीन क्या रहती है? Because आप इतना कुछ एक साथ करें, now you're also producer. पता नहीं, वैसे प्लानिंग नहीं होती है. It depends on how I wake up, what the schedule is. अगर कुछ दिख जाता है मुझे अद्भुत, और मुझे चाह होती है वहाँ पे जाने की, मैं चले जाता हूँ. So I don't plan it like that anymore. It has to be different. कुछ ऐसा तो करना है जिस चीज़ से डर लग रही है, कुछ ऐसा तो करना है जिस चीज़ से घबराहट होती है. So छोटी छोटी चीज़ें करने में मजे आते हैं. Anything जो आपको excite करती है तो you just go with that. नहीं, जैसे अगर मैं कोई वीडियो भी देखता हूँ और मैं कुछ, for example, if I see somebody singing, for example, और वो अलग सा सुर निकाल रहा है, तो मुझे लगता है ट्राई तो करना चाहिए. So, मुझे उस तरह की चीज़ों में मज़े आते हैं. मैं अभी गाड़ी में था और मैं सुन रहा था, कुछ तिब्बतन म्यूजिक सुन रहा था, एंड द वे दे वर मेकिंग दैट साउंड, मैंने कोशिश की, मेरे ड्राइवर ने भी रियर व्यू मिरर में घूम के देखा कर क्या रहे आदमी. So, मुझे मज़े आते हैं. मेरा अगला सवाल आपसे यही था. But not only that, he's very hardworking. ये नहीं है कि it just comes. It is hours and months of practice. Of course, we And know that he's I'll sounding tell you in humble, this but he's film, very hardworking. he's a rollerblader. He never rollerbladed in his life before. You want to tell them the story of how you've done your Please. rollerblading? He has rollerbladed in London.
Okay, he got some amazing stories about. मैंने काफी किया कुछ. हाँ, he's been rollerblading in London. He met all these this gang of rollerbladers. Okay. बदमाश टाइप के. सब बदमाश गुंडे थे. Okay, सारे गुंडों को उठा के they made them part of the film. सब इसी के साथ घूम रहे थे. Okay, they've been rollerblading in Poland. They're rollerblading in wherever we were, whichever locations that we were at. He's never taken his rollerblades off in the whole film. He lived in them. He was rollerblading in his. He's rollerblading in his. उनकी भी सजा थी, साथ नहीं चलना पड़ेगा. हम एक फिल्म में हम एक शॉट कर रहे थे जहाँ पे हमें मना कर दिया गया था कि दिस इज वेरी रिस्की. सो आई वेंट टू माय डायरेक्टर आदित्य एंड आई सेड ये तो मैं कर रहा हूँ. स्टेज से उतरना था जहाँ पे चौक पे. सो पहले तो बहुत प्रेशर है एक्शन डायरेक्टर की, ये है वो है. फिर मैं तैयार हो गया, मुझे पता लगा ये भी करना चाहते हैं. प्लीज टेक अ लॉट ऑफ टाइम. फिर हम दोनों ने वो स्टंट किया. आई एम श्योर अगली बार ये जो चैलेंज है ये शिल्पा एंड विक्रम तक भी पहुंच जाएगा. व्हाट इफ यू गेट अ चैलेंज टू सिंग लाइक यू नो हाउ विद्युत डज? That's what we're trying to match up. No? Like you're trying to make your voice do things that he's doing physically. They're so right. You can't just go up to someone and say, "Oh, you're so talented." Yeah. It's not that. There's that consistent, conscious, willingness to be better every day. It's like a pledge that you do every day. That I'm gonna get up and I'm gonna do this and I'm gonna be better. So. Yeah, we're trying to match up. I'm also trying to match up. कितने humble भी हैं. मैं कुछ नहीं उठता हूँ, मन करता है कर ले. इतना कुछ करने के बाद मुश्किल काम है कि उठो और सोचो कि आज क्या करेंगे, जो सामने आएगा वो करना. वो आसान नहीं, वो humble नहीं, वो बहुत मुश्किल काम है. Actually, मुश्किल काम. So Shilpa, what is your routine like, every day? Because of course, as a singer, as a super busy singer, you have shows, you have dubbings and etc. So I'm sure a lot of fans would want to know कि Shilpa Rao, the best voice so far, उनकी क्या routine रहती है? First of all, don't get up with an alarm. I think that's like a bad way to get up. Right. So जब आप उठना चाहते हैं तब उठिए. I sleep for 10-12 hours a day, which is very important. 10-12 It's important. hours. नहीं, आवाज नहीं चलती मेरी. Wow. I think it's nice to get up. We record in the night, so there's no pressure getting up early in the morning and all of that. So. That's amazing. Yeah. I hope मेरी माँ देख रही हो, because मैं 9 घंटे सोता हूँ, मुझे बहुत सुनने को मिलती है. So पहली बार I'm feeling proud कि ठीक है, it's not bad. और मेरा बेटा देख रहा हूँ, वो तो बीच में सोता है हमारे. अच्छा, वो भी. और वो तो लात मारता है मुझे. मैं 4 बजे उठ जाता हूँ सुबह. Right. And Arjun sir, of course, we also want to know your routine, because you've been busy all your life working, shooting, and back-to-back shooting hours. What is your day like? It's quite disciplined actually. I wake up early. That's true. Very, very early in the morning. I wake up by 6. I meditate for half an hour. Okay, then I just sit with myself. Then I finish all my text messages and WhatsApp messages and all of that. Then I throw my phone away, because my kids wake up, and then I spend time with them and take them to school, and then I drop them. And then I come home and read the script, so I have my meetings. Or if I have to go to shoot, then I go to shoot. Then I spend time with my dogs. I cycle, I work out, I eat healthy and sleep by 9:30, 10. मतलब जितने हैंडसम है वो देख के लगता है कि बहुत चिल्ड आउट रूटीन होगी. That's a lot of work. Yeah, but then it's entirely opposite to what you think. So Vikram, of course, we know this is a huge responsibility. We discussed. So tell us, जब you were making this song for the film Crakk, जब ये आपके पास आई, how as a music composer you plan, you design कि विद्युत है, action तो back to back होगा, Arjun is there. So how do you actually frame and create music? Because music is definitely, it's like 50% of the film, I feel. Yeah. That's my personal opinion. अगर गाने अच्छे हैं तो फिल्म ऑटोमेटिकली delivers. मेरा प्रोसेस बड़ा सिंपल रहता है इस मामले में. डायरेक्टर का विजन फॉलो करना है. Right. What is he thinking? And luckily मुझे डायरेक्टर बहुत अच्छे मिल गए कि he was very clear with the brief. We started working on the song. We wanted to create a very different kind of a soundscape. Right. तो विजन फॉलो करते गए, आया. And then two personalities, when you have something to that for me, making music, I need to visualize what's going to happen in the film, and I need to know the scenes. That happened तो easily हो गया. And yeah. And मैं जानना मुझे पता है, like I've been listening to the, हम लोग अभी बात भी कर रहे थे about the trailer and the background. You use very different instruments. जैसे एक ढोल की भी आवाज सुन रहा था मैं भी हाल ही में आपके उसमें. It was different. Like, how do you, have you educated yourself, or you get
gravitated towards these instruments कि तुम अद्भुत तरह का म्यूजिक बनाते हो? नहीं, बिकॉज जितना ज़्यादा मेरी ट्रेनिंग जो है वो म्यूज़िक सुन के और मूवीज़ देख के ही हुई है. सो माई थिंग इज़ कि कोई भी सीन हो उस वो एलिवेट कैसे होगा विद साउंड, बिकॉज साउंड कैन समटाइम्स मेक और ब्रेक अ सीन. एट द सेम टाइम मीनिंग भी चेंज कर सकता है इंटायर थिंग की. तो आई कीप ऑन थिंकिंग. वो मेरे अपने स्लॉट्स होते हैं जब हम लोग स्कोर कर रहे थे. Like I want to ask you one question and, too. yeah. Okay, which is very important question for me as an actor. Yeah. Supposing we both are doing a scene, एक सुर होता है scene का. Yeah. Okay, we're not shouting, we're not Correct. screaming, but it's very intense. Yeah. Okay, how do you score on the scene like that? Okay. So क्या आप या सुर पकड़ते हो of the dialogue delivery, Yes. you know, या mood of the scene कि ये mood है scene का, and how do you do it? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, you some background people I feel you've spoken very softly, Yeah. उतना loud music डाल देते हैं कि आपकी आवाज़ ही सुनाई नहीं देती. Correct. You know, फिर वो mix में Yes. गड़बड़ हो जाता है. वो गड़बड़ हो जाता और फिर या फिर परफॉर्मेंस में गड़बड़ हो जाता है, या फिर आपको बुला देते हैं, वो बोलते हैं कि इस सीन को लाउडली डब करो. है. प्रोसेस बहुत सिंपल होता है. हर सीन की आपकी एक रिदम होती है. मैं रिदम पकड़ता हूँ, रिदम एंड इमोशन, दैट्स अबाउट इट. और उसके बाद हर कैरेक्टर की अपनी एक आई फील अपना एक साउंड होता है. वट एवर कैरेक्टर यू आर प्लेइंग ऑन स्क्रीन. सो लाइक योर कैरेक्टर इन क्रैक हैज अ साउंड टू इट, हिज कैरेक्टर हैज अ साउंड टू इट, विच ऑल डिपेंड्स on the script level, how it has been written and then how it has been shot or what we are looking at. So for me, music should never dominate the scene. It should elevate the entire क्या scene बात है. Amazing. and the Very character. Great. Yeah. नो वंडर विक्रम का म्यूजिक जो है आजकल के म्यूजिक से कई हद तक कई मायनों में अलग है. एंड दैट्स हाउ नॉक नॉक तेरा बाप आया वाज क्रिएटेड. व्हाट अ ब्रिलियंट क्रिएशन दैट वाज. Yeah. मूविंग नाउ अहेड, वी हैव अ फन वर्ड. वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, सो मैं आपसे क्विकली आई हैव सम क्वेश्चंस एंड देन यू विल हैव टू आंसर. शिल्पा नोज द रूल, यू नो द रूल्स, सो या लेट्स स्टार्ट, है ना. आई विल थ्रो सम क्वेश्चंस एंड आई विल नेम एंड देन यू विल हैव You टू have to catch them. या यू विल हैव टू कैच इट. विद्युत एंड अर्जुन, ये आपसे है. सबसे ज्यादा मजा क्या प्ले करने में आता है, गुड बॉय बैड बॉय? दोनों. एक जवाब दो. जब मैं बैड बॉय प्ले कर रहा होता हूँ मुझे बहुत मजे आते हैं. जब मैं गुड बॉय प्ले करता हूँ मुझे बहुत मजे आते हैं. Bad boy. राइट, योर गिल्टी प्लेजर? Sweets. विद्युत? मुझे पता नहीं, मुझे नहीं, जो मन नहीं. करता मैं करता हूँ. Guilty नहीं है उसको. नहीं, मैं अगर कुछ करता हूँ तो मुझे गिल्ट लगता ही नहीं हूँ. मैं नहीं. मन कर रहा तो खा लेता हूँ गुलाब जामुन, नहीं खाऊंगा तो गिल्ट हो जाएगा. नहीं, ये वाकई में खा लेता है. Point. नहीं, guilty मिठाई का तो नहीं बॉक्स ऐसे खाता खा है. लेगा. शिल्पा, योर गिल्टी प्लेजर? Now I will definitely go by what my father always says. Why are you ashamed? Why are you embarrassed? So you got inspired by Vidyut बहुत today. सही बात है. No, Like you know, me. more than okay, you did something. You took a chance. Yeah. You made a mistake. It didn't work out. Mistakes It's are okay. great. It's great. You that makes you what you are. I mean, You know what not to do. Yeah. or next time Yeah. how to avoid like, it. avoid it and go around it. So I think dad बहुत सही बोलते थे. There's no place for shame or embarrassment. You have to do what you have to do. आज मस्ती के शो में मैं और शिल्पा दोनों इंस्पायर हो गए. हाई फाइव. High five. विक्रम? Only pleasure, no guilt. No guilt at all. That's again a deep answer. That's a great. That's again a very deep answer. विद्युत की फेवरेट विद्युत फिल्म? मुझे जंगली फिल्म करने में बहुत मजा आया था. उसमें मैंने 50 हाथियों के साथ रोज काम किया था. एवरी डे फॉर अबाउट 60 days आई वाज लिविंग विद द एलिफेंट्स. वो अलग एक्सपीरियंस था. सो वो उन एक्सपीरियंसेस में से जो मुश्किल से दोबारा आते हैं. अर्जुन रामपाल की फेवरेट अर्जुन रामपाल फिल्म? Daddy was good. I really enjoyed it. But I think Rock On. शिल्पा राव's फेवरेट शिल्पा राव सॉन्ग? तो उससे ना लगे. I don't know. It just reminds me of my 2006 self. If I want to meet that person again, I play that song and you just get transported back. Maybe yeah. विक्रम? कर हर मैदान फतेह. कर हर मैदान. True that. So your inspiration comes from where, Vidyut? Anywhere, anything that I get attracted to, I get inspired. Arjun? I think from yourself, from within, you have to get inspired. So anybody can actually inspire you. कोई भी कर सकता है. कोई भी कर सकता है. Shilpa's inspiration for such a super hit? First of all, you don't think of a super hit. First you think of that happiness because आप studio में काम कर रहे हो and it's a happy place. It's a happy thing to do. So if you're not happy with the song, how will someone else be happy when they hear it? So True. at least have a good time. Stop thinking of it as a job because after you've worked for 5-10 years, you feel अरे वो तो autopilot पे जाता है. Be that same kid who wanted to be in the studio and who longed for it. I tried to attach myself with that childlike self जो
that naiveness जो that हम- you have. Yeah, be naive, be stupid, be strange, be weird, whatever you want to. Just be that childlike self when you're working, and don't Yeah. lose it. Vikram, Yeah. your inspiration? If I'm making music for myself, I'm in a certain mood, I'll go for it because I listen to all type of music, so I like making all type of music. And when it comes to work, then it's just the script and the director. I'm very clear about it. Then I don't get distracted here and there. ये सवाल तो मुझे विद्युत से शुरू करना पड़ेगा. Vidyut is already laughing. What is your favorite workout day? Ask him which hour. Which is his favorite workout hour. नहीं, शरीर में तो इतने हिस्से हैं जिनकी मतलब लगे रहें तो पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है. मैं हर हिस्से पे मतलब ध्यान देता हूँ उसको. It takes me a while, but yeah, I'm working out. His workouts are like 5-6 hours. We'll start. I think start ladies first. So you'll Okay. pick a chit, और आप enact करेंगी. I You know. have to guess. Yeah, and All right. industry के दिग्गज actors will guess. ऐसा थोड़ी होता है यार, ये तो बहुत मुश्किल काम है. अरे तुम माय- परीक्षा दे रहे हो यार. यार ये तो मुश्किल है. ऐसी कोई चीज नहीं जो विद्युत जमवाल नहीं कर सकते हैं. So I मैं think. मानता हूँ, मगर मानी तो होना चाहिए इस टाइम पे. All right. Yeah. 4 words. ठीक है. हिंदी. Hindi. अच्छा. पहला वर्ड मैं. तू. तू. तीसरा word. मैं. मैं. दूसरा वर्ड बोलूं. बोलती. गाऊं. गलत बोलती. गलत. झूठी. तू झूठी मैं. Oh, क्या बात है. Yeah. Hard movie buff. अभी सवाल पूछेगा आपने एक्टिंग के बारे में सोचा कि नहीं सोचा. नहीं Please, Arjun. मुझे क्यों. Come on. Pick. विद्युत. जमाना क्या लिखा है? पति पत्नी और वो. अरे सर, हाँ पति पत्नी और वो. बस हो गया. हाँ, we guessed it. ये चीटिंग करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था. उन्होंने मुझसे पूछा. अच्छा चलो. Right. So we have Arjun. Sir, please आप नाम मत अरे ले यार, लेना. वो- You'll have to act. It's English or Hindi? English. राइटर. Writer, Poetry. author, poet, astronaut, पायलट. not pilot, fighter. भगवान. गॉड. One word. डिवाइन. Fighter. बहुत टफ है मेरा. हारो मत ना, बहुत इजी है मुझे लग रहा है. नहीं. उसका हिंदी Works of में having बता. motivation always. ओके चलो. You're cutting in 2 parts. Okay. Second part. दर्शक. ऑडियंस. Cricketer, player. 6 बाहर. ऊपर. गायब. नहीं. बताओ ना. वहीं पर जाओ. Player, 6 पे. 6 Six, के six, ऊपर six. क्या आता है? 6 के ऊपर तो नोबल होती है. Century. मेरे को टेंशन हो रही है. Century क्या? Is it Uri? हाँ. Uri? Another word for century. Century. दशक. Decade. In English. 100. In English, 100. थोड़ा माफ है रूल्स. 100 decade. I think it will be Yeah. Tough one. tough one, yeah. It's a new turn. But I think एक और दे. I love this spirit. I love this चलो. spirit. ये देखते हैं. problem है. All right. But पहले Hindi. 4 words. Okay. Dil. Oh, Dilwale Dulhaniya Le Jaye. अरे. I love the spirit. और ये एक्टिंग पिक्चर में नहीं की मैंने. right on that note, Vidyut, Arjun, Shilpa, Vikram, wish you all the really best for your film Crakk. जितना Yeah. कमाल का ताबड़तोड़ ये ट्रेलर लग रहा है, I'm sure because it's a Vidyut film. Arjun Rampal is there, Shilpa की आवाज, Vikram का म्यूजिक, तो I'm sure करोड़ों बरसने वाले हैं. And wish you all the really best. Thank you. And I hope जो बॉक्स ऑफिस है उसको क्रैक कर दें. God. Yes. Thank you so much. Thank you. And lovely to have you. और जाने से पहले आप जानते हैं मस्ती सेल्फी बनती है, so